अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्स इन द सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लास 8 की साइंस से है ये। तो हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन रह गए थे तो आज हम वही करते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं ये। चूज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1 to 3। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है। एन एस्टीरियोइड, ए सैटेलाइट, ए कॉन्स्टलेशन, ए कॉमेट। तो इसका आंसर है कॉन्स्टलेशन। एक्सप्लेनेशन इसकी है, ए कॉन्स्टलेशन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। देयर आर द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट forms a recognizable is known as constellation. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। प्लैनेट ऑफ सन कौन सा नहीं है? साइरियस, मरकरी, सैटर्न, अर्थ। तो साइरियस है इसका आंसर। साइरियस इज ए स्टार नॉट द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये एक स्टार है, ना कि एक प्लैनेट। थर्ड इज phases of the moon occur because we can see only that part of the moon which reflects light towards us. B part, our distance from the moon keeps changing. Third, the shadow of the earth covers only a part of the moon's surface. D part, the thickness of the moon's atmosphere is not constant. तो आंसर आएगा इसका A part, we can see only the part of the moon which reflects light towards us. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट इज़ ओनली बी सीन बाय अस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मून। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो हमें ये नज़र आता है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, सो वी कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून ऑन विच द सनलाइट फॉल्स एंड रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स अस। Question number 4 is fill in the blanks. The planet which is farthest from the sun is। तो कौन सा है वो? नेपच्यून है जो सबसे दूर है। The planet which appears reddish in color is। वो है मार्स जिसका कलर कैसा है? रेडिश कलर। सी पार्ट है, a group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as constellation। जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें नज़र आए आसमान में तो उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ए celestial body that revolves around a planet is known as सैटेलाइट, उसको सैटेलाइट कहते हैं। शूटिंग stars are actually not stars. Asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter। हो गए फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उन्हें हमें टी लिखना है, जो फॉल्स है तो उन्हें हम फॉल्स बताएं। पोल स्टार इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसका आएगा फॉल्स। पोल स्टार इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। बी पार्ट है, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो मरकरी है वो एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो ये ठीक है। तीसरा है, यूरेनस इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये गलत है, बल्कि नेपच्यून है सबसे दूर वाला प्लैनेट। डी पार्ट इज़ इनसैट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये ट्रू है, सही है ये। ई पार्ट, देयर आर 9 planets in the solar system, false है, there are 8 planets in the solar system, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। F part है, constellation Orion can be seen only with a telescope, तो this is false। constellation Orion can be seen during winters around late nights। सर्दियों में ये लेट नाइट में ऐसे ही हम इसे देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट
मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई विजिबल टू द नेकेड आई। ये हमें ऐसे भी नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। ए है इनर प्लैनेट्स, तो इनर प्लैनेट में आएगा, इस साइड आप देखो, जी पार्ट मार्स एंड ई पार्ट अर्थ। इनर प्लैनेट्स में ये दो आएंगे। आउटर प्लैनेट्स में आएगा सैटर्न ए पार्ट, जो बी साइड में दिया हुआ है, एंड कॉन्स्टलेशन में आएगा ग्रेट बियर एंड ओरियन। ओके। और फिफ्थ है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये है मून। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो कौन सा है? द प्लैनेट वीनस इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई आफ्टर सनसेट एंड इज said to be known as evening star. Name the largest planet of the solar system. Jupiter. Jupiter है सबसे largest planet. What is a constellation? Name any two constellations. Constellation, a group of stars that forms a recognizable pattern in the sky, is known as a constellation. Two constellations are Ursa Major and Orion. 10th है draw sketch to show the relative position of prominent stars in A, Ursa Major and Orion. तो यहाँ पर दिया हुआ है A part. Orion seems to be like a hunter. The three bright stars appear in the belt while four bright stars are arranged in the form of quadrilateral. B है Ursa Major seems to be like a big dipper. There are four stars in the bowl of the dipper and three bright stars in the handle. और यहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कौन कौन से हैं? मेटियोर्स, एस्टेरॉइड्स। Meteors are small celestial objects that are seen as bright streaks of light in the sky. Due to the heat produced by the friction of the Earth's atmosphere, the meteors are burnt out while entering in. This causes the bright streaks in the sky. They are not planets. Asteroids. Asteroids are the collection of a huge number of small objects, gases and dust revolving around the Sun between the orbit of Mars and Jupiter. They occupy the large gap. These are not planets. They are the celestial bodies and are known as asteroids. 12. Question number 12 is explain how you can locate the pole star with the help of Ursa Major. तो यहाँ पर दिखाया हुआ है फॉर लोकेटिंग द पोल स्टार इज द इन द स्काई फर्स्ट द बिग डिपर और द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन मस्ट बी फाउंड द बॉल ऑफ द बिग डिपर consists of four bright stars. Imagine the two stars at the end of this ball, then make an imaginary straight line towards the northern direction connecting these two stars. This imaginary line meets the star called pole star. The length of the imaginary line from the ball is about 5 times the distance between the two stars of the ball. Question number 13 is do all the stars in the sky move? Explain. No. इसका आंसर no. The earth rotates on its axis from west to east. जो अर्थ है वही रोटेट करती है. Therefore, all the stars in the sky except the pole star seem to be moved from east to west. With reference to Earth, pole star in the sky does not seem to move because it is located above the axis of rotation of the sky of the Earth in the north direction. It seems to remain stationary at a point in the sky. Question number 14 is why the distance between stars expressed in light year. What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the Earth?
The distance of the star from the earth and the distance between the stars are very huge. It is troublesome to express this distance in kilometers. Therefore, these huge distances are expressed in light year. 1 light year is equal to the distance traveled by the light in one single year. 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised power 12 kilometers. The distance of the star from the earth is 8 light years. 1 light year बराबर है 9.46 into 10 raised power 12 किलोमीटर और distance from one star from the star distance of the earth a distance of the star from the earth कितनी है 8 light years. This means the distance between them is equal to the distance traveled by the light in 8 years. That is 8 into 9.6 into 10 raised power 12 is ये बनता है 7.6 into 10 raised power 13 kilometer away from the earth. अब है क्वेश्चन नंबर 15. द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. जितना रेडियस अर्थ का है तो जुपिटर का रेडियस उससे 11 टाइम्स ज़्यादा है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जुपिटर ऑफ द एंड द अर्थ. हाउ मेनी अर्थ्स कैन जुपिटर accommodate? Let's consider Jupiter and Earth are two spheres with and or respectively given in the question that radius of Jupiter is 11 times the radius of the Earth. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कल कराती हूँ पूरा. वीडियो बड़ी हो गई इसलिए आज इतना ही. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.